So in that chapter 4 we are just revising one more time as a recap. Okay, so take out the page number 51 everybody. First we will just recap of the fourth chapter and then we will start the third chapter. Okay, now everybody take out page number 51 and keep your video on. Okay, then start it. Chalo. First, we have to remember the atomic number and the symbol of that particular element. So first number पे होता है hydrogen, second number पे होता है helium, third is lithium, fourth is beryllium, fifth is boron, sixth carbon, seven number पे क्या आएगा? Carbon, nitrogen, Nitrogen, eight is oxygen, nine is oxygen, nine fluorine, is fluorine, 10 is neon, 11 is sodium, neon, sodium, 12 is magnesium, magnesium, 13, aluminium, 14, aluminium, silicon, 15, phosphorus, 16, sulfur, 17, chlorine, chlorine, 18 argon. Okay, so these fluorine, are the 18 elements are Argon. there, and in that we have discussed the electron configuration. If the atom has last 1, 2 and 3 electrons, they will try to lose the electrons and convert into the plus sign, plus charge. And if the outermost orbit 6, 7 and 8, 5, 6 and 7 electrons are there, it will convert it into the good, convert into the negative charge. महेंद्र ये सब है, बट आपको जस्ट अभी के लिए 20 एलिमेंट्स को लर्न करना है. ओके, बाकी के आप पढ़ोगे पर ये नेक्स्ट जब आप 11th में जाओगे ना तब इट इज यूज ऑफ दैट. ओके, अभी इतना नहीं है यूज. सो नेक्स्ट इज व्हाट? मैम सारे सीक्वेंस वाइज ही करना है लर्न. हाँ बेटा, मैम सारे सीक्वेंस वाइज ही सारे लर्न करने हैं. हाँ सीक्वेंस वाइज ही लर्न करोगे तो आपको आइडिया आएगा. बाकी that would be very difficult for you to remember the electron configuration, means how many electron it that have. So इस सीक्वेंस में लर्न करोगे तो इजीली याद रहेगा आपको. So in this chapter 3rd we are going to use of this element, how they combine with the another element, what is the bond, from which bond they are joining with them, that we are going to discuss in this chapter. First we will see the introduction of these atoms and the molecules. Okay, जैसे एंटर हो रहे हो प्लीज योर कीप योर वीडियो ऑन ओनली. वीडियो ऑन करके ही बैठे सब लोग. So in ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. Means they will look the matter but they don't know about that matter particular, how it is made up of, which atoms and which molecules are there in this matter, they don't know first of all. So the idea of indivisibility of matter was considered long back in India. Like if they have taken the chalk, they have started to cut it down and convert into the smallest part of this chalk. वो कैसे बनते हैं, which particles are included to form this matter, that they have started to discover now onwards. Around 1500 BC. BC का मतलब क्या होता है? What is the meaning of BC? ऐसे पढ़ा ही नहीं तो फिर आपने, है ना? Common era, before common. हाँ, Before common era. बिफोर क्रिस मीन्स वो बहुत सारे ईयर्स होते हैं उसके अंदर. एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कानड़ postulate that if we go on dividing matter, that is in Gujarati it is called as a padarth, we shall get smaller and smaller particles. So take a matter like a chalk, if you are going to divide it you will get a smaller and a smaller part of that matter. Ultimately a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible.
उसके बाद हम उसको इतना डिवाइड करते हैं कि एक स्टेज आ जाता है कि जिसके बाद वो मैटर को हम और छोटा नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स एज अ परमाणु. ओके, सो जो जो अभी वो डिवाइड नहीं हो सकता, that is called as a परमाणु. ओके, another Indian philosopher Prafuda Katyanma elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in the combined form, which gives us various forms of matter. तो उसके बाद बहुत साइंटिस्ट और फिलोसोफर से बातें की, but they didn't conclude anything. Jai, we are not doing now chapter 4th, we are doing on page number 31, chapter number 3, atoms and molecules. Around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. उन्होंने भी वही किया कि if we are getting the particle and after dividing much more time, it will come at a particular stage, then after it will not divide further. Democritus calls these indivisible particles that as atoms, meaning indivisible. Atom वही होता है जो further divisible नहीं होता, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता. तो छोटे से छोटा कौन होगा? Atoms is the smallest part of the matter. All this was based on philosophical consideration and not much experimental work of validate these ideas could be done till the 18th century. ये सब कुछ जिसने भी किया है वो फिलोसफी के आधार पे किया है, कोई भी एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर नहीं किया गया है. ओके, इट इज जस्ट द गिवन द आइडिया रिगार्डिंग द सोच, उनकी थिंकिंग से हुआ है, कोई पर्टिकुलर केमिकल या एक्सपेरिमेंटल से नहीं हुआ है. इन शॉर्ट, by the end of 18th century, scientists recognized the difference between the elements and the compounds and naturally become interested in finding and how and why elements combine and what happen when they combine. उनके बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, और उसके लिए अगर वो कंबाइन होते हैं तो क्या क्या हो सकता है. ओके, that they have started after 18th century. Accordingly, Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination that is excluded from our chapter. First is laws of chemical combination that is excluded from the syllabus, right? तो है, चलो, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कैसे molecules and atoms are joining together, कैसे join होते हैं, कैसे combine होते हैं, that we are going to study now. So the following two laws of chemical combination were established after much experimentation by Lavoisier and Joseph P. Proust. तो उन्होंने किया, उसके बाद नियम बने, रूल्स बने. फर्स्ट लॉ इज गिवन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हम मास को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं. इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. मान लो कि वाटर हम बना रहे हैं, मींस वी वांट हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन. सो हाइड्रोजन का अगर जो भी मास है एंड द ऑक्सीजन का जो भी मास है, तो वो कंबाइन होके कुछ नया बनता है कि नहीं बनता है. अगर बनता भी है तो उनके मास पे क्या इफेक्ट होती है, दैट वी हैव टू डिस्कस नाउ. So for that we are taking the X and Y as an element. So in the X we are taking the copper sulfate. The symbol is CuSO4. Copper means Cu, sulfate means SO4, and sodium carbonate Na2CO3. Okay, that too we are taking. Second, barium chloride. Barium means Ba, BaCl2, and sodium sulfate means NaSO4, Na2SO4. लेड नाइट्रेट, लेड मीन्स पीबी, पीबी को हम लेड बोलते हैं. सो लेड नाइट्रेट PbNO3, and sodium chloride that is salt, common salt
that is formalized NaCl, that we are going to mix it at a proper weight. Now what we are taking, now from that we are preparing separately at 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y, each in 10 ml in water. So 10 ml water ले रहे हम, उसमें 5% solution उसका डाल रहे हैं. Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in the ignition tube. क्या करना है, जो भी Y है that we are taking in the conical flask, दिख रहा है आपको conical flask, उसमें हम ऐड कर रहे हैं, और वो जो टेस्ट ट्यूब दिख रही है उसमें हम X का जो भी कंपाउंड है that we are going to add it. Now hang the ignition tube in the flask carefully. उसके ऊपर हमें लटकाना है, ओके, जो गर्म है थोड़ी सी. See that the solution do not get mixed. इतना ध्यान रखना है कि वो दोनों सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब का एंड द कॉनिकल फ्लास्क का they will not get mixed. Put a cork on the flask. ऊपर से उसको बंद कर देना है कॉर्क लगा के. बोलिए मैम. इसमें ना 3.1 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, वही कैंसल है, और 3.5 कैंसल है, बस बाकी पूरा आपको एक बार ना पढ़ लेते, क्योंकि एक ही लोग कैंसल है बराबर, तो बाकी का पढ़ लेंगे ना तो अच्छा रहेगा. 3.5 भी ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सो एक बार पढ़ लीजिए, ओके, तो थोड़ा काम आएगा. हाँ, उसमें कुछ नहीं है, उन दोनों को सेपरेटली बाद में वेट करना है. वेट करोगे तो कितना वेट आ रहा है, सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, वो आपको देखना है. सो अगर आप वेट करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो भी वेट है वही का वही होगा, उसमें से कुछ कम या ज्यादा नहीं हुआ है. सो एट द एंड व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो अगर कोई भी chemical reaction होता है तो mass कम भी नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं होता है, it will remain as it is. That is a law of conservation of mass. Okay, now we will do laws of constant proportions, that is on page number 32. Okay, so in that what we can conclude that we will discuss. Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compound came from or to who prepared it. जैसे कि मान लो कि water है, water means what, H2O. So ये hydrogen and oxygen, two different compounds are, different elements are present. It is not a single element. So here more than one element is present. They have made the compound. In other state, if we are talking about the oxygen gas, what is there? 2 mole of oxygens are combined together to form only one simple compound, that is oxygen. Means same type of elements are present in oxygen and different types of elements are present in the water. वाटर में अलग अलग है और उसमें ऑक्सीजन गैस में सेम ही एलिमेंट्स है. In a compound such as water means H2O, the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. अब 1:8 कैसे आया वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. Okay, and if you know the mass of hydrogen, so hydrogen, the atomic number is 1. So what would be the mass if we are taking the water? Okay, so what is the ratio of hydrogen and the atomic mass? Atomic mass hydrogen का क्या होगा? Atomic mass of hydrogen would be only 1, and atomic mass of oxygen would be 16. Okay, so here how many hydrogen are there? 2 hydrogen is there. So 2 into 1 will come, and you can take the ratio. So oxygen का कितना है? 16. So we are taking मैम ये 2 into 16 कैसे 16. आया एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? अरे 2 hydrogen नहीं है. So number of hydrogen are over here 2. So 2 into 1 will become. Here oxygen is only 1. So 1 into O. 1 into 16 will become 16 only.
The 2 ones are 2 into 16. Maybe you will get 1 into 8. Like this will we get the average proportion of water. I समझ में ना? नहीं आया मैम. बस तो पढ़ो थोड़ा. फोर्थ चैप्टर किसी ने किया ही नहीं अभी तक. Tomorrow I will ask you the fourth chapter properly, because you don't know what is the atomic number of oxygen. Do you know what is the atomic number of oxygen? You have to find it out. You should know that first the atomic number of oxygen is 8. So that mass will be the double or 16. huh? 16. Atomic number is 8. Atomic mass is 16. मास का मतलब वेट होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है. This I am telling you, just first refer the fourth chapter first. Then only you can conclude that how you will get the mass. And if you remember, in that fourth chapter we have discussed the atomic mass as well as the atomic number. Take out the page number 51 again. Everybody take out your page number 51. Take it out 51 page number. देख लो अभी. On Monday I will ask you all the 1 to 20 elements, उसकी configuration and everything. Atomic mass also. Now, if I am talking about the atomic number, you have to speak it like this. Magnesium, what is the atomic number? So magnesium is on 12 number. So its atomic number would be 12. Understood this much? Look inside the textbook. Yes. Okay. Now, second is that what is atomic mass? Okay. Atomic mass का मतलब क्या होता है? You have to add proton and neutron. Total of proton and neutron will be your atomic mass. Clear? If I am talking about the atomic mass of sodium, तो सोडियम का कितना होता है? 11 plus 12. It will become 23. Understood this much? So atomic mass of sodium would be 23. समझ में आया सबको? मोस्टली एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर होता है उससे डबल होता है या डबल से +1 होता है. सोडियम का 11 है, 11 2s are 22 plus 1 is 23. That's why the atomic mass of sodium would be 23. Clear to everyone this much? Yes. You have to remember atomic number. Atomic mass you have to calculate by adding the number of protons and number of neutrons. Clear to everyone? Mahendra, Nidhi, Jai. Yes. Yes, ma'am. And second thing that I am going to ask you, that is this one. If sodium has atomic number is 11, only now 10 minutes are there. Sodium has the atomic number 11, and what is the atomic mass? मैंने आपको बोला है कि you have to also learn atomic mass. Atomic mass is the number of proton plus number of neutron. Okay, as you know that 11 is a proton and neutrons are 12, you will get 23. That you have to remember. So आपको ऐसे लिखना है 11 सोडियम 23. नीचे आपको लिखना है उसका एटॉमिक नंबर एंड ऊपर आपको लिखना है उसका एटॉमिक मास. मोस्टली एटॉमिक नंबर आर डिनोटेड एज अ Z and atomic mass is denoted as a. Clear this much? Now, secondly, I am going to ask the electron configuration. This how the electrons are arranged. So, sodium के पास 11 electrons are there. So, how it will arrange? In first orbit, maximum 2 electrons can occupy. In second orbit, maximum 8 electrons can occupy, and the rest 11 is total, right? So 2 and 8 is completed. So
that happen. So only one electron is left that will go into the next orbit, that is 1. Okay, so इस सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होती है 281. ये आपको KLMN में दिखाया गया है अंदर. Okay, that is the electron configuration, or you can say distribution of electrons. If we are talking about the carbon, तो C carbon 12, उसका atomic mass होता है 12. तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी 2 and 4. बिकॉज उसके पास only 6 electrons आ जाए. In first orbit maximum 2 electrons, and fourth orbit in next orbit maximum 4 electrons can occupy. Similarly, chlorine is there. Chlorine is the exceptional case if you are taking the sulfur. Sulfur is what? It is coming on 16 number. 16 sulfur, right? तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक मास विल बी ऑफ 32. इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन विल बी 286. Now, second thing I am telling you, if in the outermost orbit, इसको बोलते हैं outermost orbit. ये होती है उसकी outermost orbit. लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो? In the outermost orbit, if 1, 2 and 3 electrons are there. If in outermost orbit 1, 2 and 3 electrons are there, they will give electron to another element and become a positive charge. जैसे कि क्या होगा? सोडियम में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, मतलब ऐसे होगा Na में 11 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और बन जाएगा सोडियम Na+. And Na+ has only 2 and 8 electron, where Na has 2, 8, 1 electron. Clear this much? समझ में आया इतना? Sodium that has 2, 8, 1 electron, means 11 electrons are there. It will lose 1 electron and convert it to Na+ charge, is positive charge, become Na+. 1 electron has been lost. Okay. Similarly, magnesium is there. Magnesium has 12 electrons, so it becomes 2, 8, 2. It will lose 2 electrons and convert into Na+2. Clear to everyone? Similarly, aluminium is there. Aluminium has total 13. Aluminium has 2, 8, 3, means 13 electrons are there. So what it will do? It will remove 3 electron, or it will remove 3 electrons and convert into Al+3. And that time it has electron only 10. Okay, if in the outermost orbit 5, 6 and 7 electrons are there, it will gain का मतलब it will take electrons from others and convert into the negative charge. Taking the example, chlorine 17 chlorine is there. What it will do? It will take 1 electron, क्योंकि उसके पास कितने हैं? 2, 8 and 7. To complete this octet मतलब 8 electron. Octet means 8 electron in the last orbit. To complete this 8, it requires 1 more electron. So it will take 1 electron from other element and convert into Cl-, which has electron 2, 8 and 8. आया समझ में इतना? Yes, ma'am. Still I am telling you, you have to learn all the atomic number of 1 to 20 element, then their atomic mass, that you have to add number of proton plus number of neutron, and you have to remember the electron configuration of 1 to 20 element. I want this all things should be written in your notebook. Okay, I will check through this online class only. मैम ये फॉस्फर का समझ नहीं आ रहा. किसका?
फॉस्फर का है ना, फॉस्फोरस का फॉस्फोरस। ओके, हाँ। तो फॉस्फोरस का कितना होता है देखिए आप, फॉस्फोरस है 15, तो 15 फॉस्फोरस, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 8 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो कितने चाहिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो फॉस्फोरस है वो क्या करेगा यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा P-3 में, एट दैट टाइम इसकी कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2 8 8, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। समझ में आया? और मैम यहाँ पर 3 और 5 भी लिखा है। अब बेटा 3 और 5 दो है यहाँ पर, वो पीछे इधर टेबल में तो 3 और 5 दो है। फॉस्फोरस में 3 और 5 कहाँ लिखा है? देखो मैं वो वैलेंसी में पीछे लिखा है 3 और 5। देखो उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 5, राइट, हमें कंप्लीट ऑक्टेट करना है तो उसको 8 बनाना है, 8 तक पहुंचाने के लिए हमें 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाँ right? इसीलिए If we 3 want लिखा 3 है। more electrons, then this phosphorus has to take 3 electrons, and that's why they will convert to negative charge. कितने electrons ले रहा है वो 3 electrons, that's why it is converted to -3 charge. आया समझ में थोड़ा सा? यस मैम। If I am taking the attendance, only Mahendra, Riddhi, Nidhi, Jai, Mayur and Harshita. Harshika is present. Rest of all are absent today. Okay. ओके चलो ये लर्न करके आना, मंडे हम ऑन मंडे विल डिस्कस नाउ।